Dhruv Rathi. Welcome to the program, Dhruv Rathi. It's good to have you on the show. Thank you for having me here. It's an honor to be speaking to a senior journalist like you. You've told me that you are happy for me to ask you political questions, and I definitely will. But I'm going to Sure. start by talking to you about yourself. Tens of millions watch your videos, they admire you, many people love you. But there's a question they don't know the answer to. Who is the real Dhruv Rathi? Will you start by telling me who is the real Dhruv Rathi? It's not some big mysterious question because everything I have already told online. In fact, I even made a video on the story of my life. There's a video literally titled The Real Story of Dhruv Rathi, where I explained how I grew up, what was my background like, and who I really am. But if you want me to describe myself in one line, I just like to call myself a YouTube educator, someone who genuinely cares about India and India's progress. Tell me about your early life. What sort of family were you born into? What sort of childhood did you have? What sort of upbringing did you have? It was a typical middle class upbringing. There's no big sob story. It was a happy middle class family. We grew up in Rohtak. I was born in Rohtak, Haryana. And then after a few years, we moved to Delhi. And for my studies in college, I was around 17 when I moved to Germany. And there I did my bachelor's in mechanical engineering and then my master's in renewable energy. But before that, did you study in Delhi? Yes, yes, my schooling was all done in Delhi. So will you share the secret of your school? There's no big secret actually. I would say I was an above average student. My focus was mostly on getting, 80% marks, which is just वो कहते हैं ना कि बस पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाए उतने मार्क्स लाने पर मेरा फोकस था। ये नहीं था कि मुझे टॉपर बनना है या कुछ करना है, और बोर्ड्स में भी मेरे ऐसे ही आए थे 85% के अराउंड, 10th 12th में। और स्कूल में मैंने पीसीएम भी ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। और उसके बाद जब इंजीनियरिंग करने का फैसला किया तो उसके पीछे भी कोई इतना बड़ा रीजनिंग नहीं थी। वो जो आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग कि a lot of people say in India that if you don't know what you're going to do, first do engineering and then later decide. But are you seriously telling me that you did engineering because you couldn't make up your mind what else you wanted to do? Was it a sort of default choice? Yeah, that's true. Because most people, during my time or even nowadays have this perception. And the thing is, what can you expect a 17-year-old to know? एक 17 साल के लड़के से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो फ्यूचर का इतना बड़ा डिसीजन उसी पॉइंट पर ले ले। आई थिंक इट्स अ बिट अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट कि कौन सा करियर पाथ मुझे चुनना है मैं 17 साल की एज पर ही डिसाइड कर लूँ। एज आई डिड इंजीनियरिंग, आई thoroughly enjoyed the studies. I loved learning about different things. I was already interested in a bit of Lego and had made my small Lego robots. I talked about this in the video and showed some videos of that. So I definitely enjoyed the studies, but when I did my internship and it showed me what an engineer's job would be like, that was the point where I was like, okay, this is not something I want to do. I enjoyed the learning, but not the actual job part of it. And that's when I found YouTube and used it as a way of expressing my creativity and passion. Now, I've been reading about you in Wikipedia, and according to Wikipedia, you did your degree in mechanical engineering at the Karlsruhe Institute of Technology, which I believe is in Germany, and you Yeah. studied there for 5 years. Do you speak fluent German? Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. No, I do speak up to a B2 level. I, of course, believe in, accepting the traditions, the culture of my wife, and she does believe in the same also. We believe in respecting each other's traditions, cultures, and languages. Where I'm trying to learn German, she's trying to learn Hindi, and we cherish each other's different lives So tell and me, backgrounds. who speaks better Hindi and who speaks better German? Is your German better than your wife's Hindi? I would say so. I would say my German is better because I spent much of my college life living here, and she didn't have that much exposure to India. She only came to India for the first time in, I think, 2018 or 19.
And but she's trying. I think it's also a more difficult language because German is still very similar to English, while Hindi is a completely different script. But I would say that she can read Hindi very well. She knows every single letter, so she can read a word which is written in Hindi Devanagari script, but often she doesn't know the meaning of that word. Now, according to Wikipedia, and Wikipedia is a great source of information on you, Yeah. in November 2021 is the time when you met and married your wife, Julie, and apparently it all happened in Vienna. Yeah. What took you to Vienna? How did you meet her? And how did you fall in love? So it's a long story. A lot of people ask me to keep it short, to not make this like a love story type of interview. We met in 2014. 2014 was a very defining year for my life, by the way, because I met her for the first time. This was also the year where I first uploaded my first YouTube video, and also the year when Narendra Modi became the Prime Minister of India, and where my interest in politics really spiked. Even though I was interested from the 2011 anti-corruption movements, but that was the defining point. But coming back to the meeting her part, I was doing my internship somewhere in a company nearby Karlsruhe, and she was studying in a school. It was her last year of school. We both were 19 years of age, and we were using the same tram to travel. The tram I used to go to the internship, she was using to go to school. And every single day we saw each other for 1 or 2 months, and that's when we started talking, and things moved on from there. So it was love on a tram. Yeah, you can say that. Tell me about the videos that have made you famous. How and when did you get into making these videos? What was your motivation when you first started? It's purely my passion because the very first video I ever made was back in 2003 or 2004. And that video was made on a webcam. My dad introduced me to stop motion. He showed me that, there is this thing called stop motion animation. You can use clay to create objects and use the webcam to take one photo of them and then combine those photos to make a video. And the very first video I made was actually a claymation movie, a 2 to 3 second clip of some clay characters moving. And I was only, I don't know, 2003, 4, I was 9 to 10 years old. So my interest in making videos goes back that far. But the type of videos I did, I always thought of it as a, expression of my creativity. The first video I uploaded was a travel vlog of a German water park. And then some videos I uploaded was just editing a movie trailer or something. And these educational videos is where I found my passion eventually. So, making videos and education videos, perhaps in particular, is what you would call your passion. Yeah, I would say so. Does it, in I a sense, define you? I would say so. Yeah, it can define me because I mean, I enjoy making travel vlogs also, which I do on my second channel occasionally. But yeah, I feel that there needs to be some concrete value given out in these videos. And that's why, this is my first preference. I feel that I can really influence people, teach them new things, educate them, spread awareness. And it's the impact that I have, which really drives me, I feel like, in some Tell me, ways. Dhruvrati, how do you choose the subjects you tackle? Are they a reflection of your own personal interest and your own curiosity? Do they reflect what's in the news and the fact that you believe people should know about them? How do you decide, I'll do this and maybe I won't do that? So initially it was just out of personal preference, but by now we have a proper system established into how do we choose topics. There are different criteria. One is what is going on in the news. Second is what I personally feel passionate about. Third is what the audience is demanding. Fourth criteria is the media giving it enough coverage, or does it deserve to be covered? Fifth criteria is the topic complex enough that when I make a video, there is something to break down into? Or is it something that is very simple and there's not much to talk about it? So these 4 or 5 criterias, I'm a very analytical person. I use a systematic way of trying to decide which topic to make a video on.
I have an Excel file. I write down these 4 or 5 criterias. I give a score out of 10 on each of these criterias, add up the scores and see which topics get a higher score. And based on that, now I decide, okay, this topic deserves the video, or this So topic does nothing not is deserve done a video. absolutely spontaneously. You've thought about it, you've considered it very carefully, you've worked Yeah. it up on your Excel file. Exactly. It's over time this process developed. And there are different factors also. When I choose a particular topic, I'm always like, I need to broaden the scope of what I'm going to say about this topic. For example, I made a video on Baba Ka Dhaba. That was the controversy that was happening, I think, 2, 3 years ago. And it was in the news also. But is it enough to just talk about the controversy, or is there something that can be taught in that controversy, something that people can learn from that? So the video, even though it was about that Baba Ka Dhaba controversy, I was using it as a way to teach people about the values I believe in. In that case, it was against media trials. I spoke about why media trials are very bad for the country. Another example could be the Amritpal Singh's arrest, the Khalistan thing that happened. I broadened the scope instead of focusing on there. I thought, what useful thing can I teach people? I told people about the Khalistani propaganda that is happening and what all they can learn from it, and just take a very broad view of the subject. So educating people, opening their eyes, broadening their horizon, that's an integral part of the videos you make. And in a sense, that is what gives you the real pleasure. I would say so, yeah, exactly. Let's then come to And Rati. in these regards, I would like to say something also, that some people ask me why I didn't make a video on a certain topic. There's also the criteria that lately, since the last 3 years, we have developed that I will never take up a video on a crime related topic. If there is a certain criminal incident that happened, some gang rape or murder, which is very unfortunate, but sometimes I do feel like speaking up, but I tend to avoid those topics because I don't want my channel to become a crime reporter type of news. And I want there to be something to be said about that topic. If there is nothing to say, if there is a crime that happened and I just have to, raise awareness on that. This is a question that comes very often कि आपने इस crime incident के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया, उस crime incident के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया. अब मेरा ये कहता हूँ कि मैं किसी क्राइम इंसिडेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाता. मैं समझ गया. There are three things in particular that strike the audience when they watch a Dhruv Rathi interview, when they watch one of your videos. Let's talk about each of those one to one. The first is the sheer power of your television anchoring and presentation. Are you self-taught, or is it a God-given talent? I'm very honored that you think it is a God-given talent, but it is absolutely not. Because all you have to do is see my old videos and compare them to my present videos. In fact, if you take a video from 2017, then see a video from 2018, 19, 20, 21, 22, you will see a slow progression of improvement that is happening in the style of speaking, in the way of presenting things, in the editing quality of the videos. Everything has improved like this. And that is what my focus is, continuous improvement. But I was a very, very bad speaker. Just take up a video from 2017 and you will see how I'm speaking. It's not at all engaging to hear me. It's not at all, um, I mean, I feel cringed seeing those videos, to be honest. In other words, you've taught yourself how to do better with every video. Yeah, it's basically years and years of doing the same thing again and again, again and again. And that's how I have improved and reached to this level. Now, the second remarkable thing about your videos, and again, it becomes very apparent from the word go almost, is the detailed quality and the extensive nature of the research. Everything is meticulously found out. A lot of effort has been put into it. Do you do the research yourself, or do you have an expert crack team working with you? I used to do the research myself, but once again, the quality of the research when I did myself was pretty shoddy. And there were many mistakes in that. But to reach this level, of course, I need a team. And there is a team working on. We have more than 10 to 15 people, I would say, in the team, both in the production and the research department. And there is similar Excel files and criterias they need to follow to review the video, to review the scripts, the arguments presented in the script, the facts being presented in the scripts.
everything is meticulously thought of and evaluated if this is the way to do it or is there a better way to do it. And the third thing that strikes everyone when they watch a Dhruv Rathi video is the very high production values. You make excellent use of video clips, graphics, newspaper cuttings, even, to be honest, humor and satire. Once again, do you have an expert team of researchers, scriptwriters, directors working with you? Yeah, I mean, basically, yes. I don't call them directors, but that is the job that they're doing. We all think a lot exactly what clip should be put where, which newspaper clipping should be shown when, for how many seconds it should be shown. There are different standards we have decided that, okay, this is how exactly, even till from the font size to the exact colors that are being shown on the screen, everything has been planned before and decided, consciously thought of. Okay, this is how we are going to show it. This is for how many seconds we are going to show it. This is when my face would come on screen. This is when this sound effect would come. All of these things have been thought of. So Dhruv Rathi is the face the country sees on the screen, the face the audience has fallen in love with, but there is a team behind it. Yes, there is a team. With Team that, of 10 to 15 Indian researchers and editors, all working remotely. so your team is in India, you are separate in Europe. I do travel to India. India is my home. Europe is my second home. And my third home is the internet, I would say. You live between three worlds. Yes. And I Right. often like to travel a lot also. With that in the background, let's come to some of the political issues that I want to raise with you. In the last month, you've done two separate videos with an astonishing combined viewership of nearly 50 million. That's huge. And they raise the question, is India a dictatorship? Your answer is that it is on the road to becoming one. So tell me, where does it fall short? What saves it from outright dictatorship? तो ये मैं हिंदी में बोलता हूँ। ये जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी कोई स्विच नहीं है कि एक स्विच ऑन किया और देश सडनली डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बन गया। ये एक स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स है जहां पर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में, फुल डेमोक्रेसी और फुल डिक्टेटरशिप के बीच में। स्वीडन का जो वीडेम इंस्टीट्यूट है वो इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डालता है, जो कि सिर्फ 2 कदम दूर है फुल डिक्टेटरशिप से। तो मोदी सरकार ने जो भी किया है पिछले कुछ सालों में, उसकी वजह से आज इंडिया की रेपुटेशन गिर गई है। दुनिया भर में इंडिया को अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कंसिडर किया जाता है। और जो कुछ हो रहा है, एक्चुअली जो भी कुछ मैंने वीडियोस में बताया है वो सेलेक्टिवली स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स थे जो बताए थे, जो 20 मिनट में समराइज किए जा सकते। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं बताने लग गया तो यहाँ पे 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, जो चीजें पॉइंट करती हैं इस चीज पर कि इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है और हमारी जो कंट्री है वो और बद से बदतर हालत में गिरती जा रही है सरकार के अंडर। फॉर एग्जाम्पल, आप जर्नलिस्ट का लेकर देख लो। अभी मैं रिसर्च कर रहा था, यहाँ पे एक सामने मैंने रखी हुई है। 2014 और 2019 के बीच में एक रिपोर्ट ने बताया कि 198 अटैक्स हुए रिपोर्टर्स पर और 40 से ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए। 2021 की सीपीजे रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट जर्नलिस्ट इंडिया में मारे गए दुनिया में। आरटीआई एक्टिविस्ट कितने मारे जाते हैं। ग्लोबल इंप्यूनिटी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग वन ऑफ द वर्स्ट बना दिया मोदी सरकार ने। ये तो जर्नलिस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट जो मारे जा रहे हैं, उसके बाद कितने जर्नलिस्ट ने अपने प्रोफेशंस को छोड़ दिया है। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, इंक्लूडिंग यू इवन। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाकर खुलकर बोल भी नहीं सकते। जर्नलिस्ट को यहाँ पर दबाया जा रहा है, रिपोर्टर्स को दबाया जा रहा है, आरटीआई एक्टिविस्ट खुलकर कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से जनता को भी दबाया जा रहा है। जनता अगर प्रोटेस्ट करती है तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है उन पर टीयर गैस बरसाने के लिए। लद्दाख में अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करे तो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया, इंटरनेट पर बैन लगा दिया। जनता को भी खुलकर नहीं बोलने दिया जा रहा है। और यहाँ 2023 की एक रिपोर्ट और है जो कहती है कि इंडिया 58% ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन जो होते हैं दुनिया भर में, वो इंडिया में होते हैं। इंडिया को वर्ल्ड का इंटरनेट शटडाउन कैपिटल बना दिया मोदी सरकार ने। ये सब हो रहा है, इतना सब हो रहा है, मतलब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। As you say, ये सब हो रहा है, and listening to your answer,
The impression that's created in the mind of the audience is India sounds like a dictatorship. So let me repeat my original question. What saves us from outright dictatorship? Where do we fall short of being a complete dictatorship so that you say we are on the road to becoming one, but we haven't got there as yet? गुंजाइश किस चीज की रहती है? अभी कुछ लोग हैं जो अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, और उन लोगों की वजह से वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये मैंने अपने वीडियो में भी कहा था, जब तक हम लोग खड़े हैं आखिर में, तब तक इस देश को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। जब So, तक in other हम words, the people of India are the obstacle in the way to becoming a full dictatorship. हम ही हैं एग्जैक्टली जो प्रोसेस को रोक रहे हैं. एग्जैक्टली If India is not a full dictatorship, is Modi a Tanasha? ये एक बार फिर से वही चीज है कि ये एक स्पेक्ट्रम है, ये कोई स्विच नहीं है कि मोदी तानाशाह है या मोदी एक डेमोक्रेट है, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। एक स्पेक्ट्रम है। मैं फिर से कहूंगा, जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह, जो एक्शंस नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लेते हैं। Modi is 70 to 80% towards becoming a Tanasha. या दैट्स व्हाट आई वुड से, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। In the video that you made on Arvind Kejriwal's arrest, there is a line of commentary that comes towards the end. You say, जोर से हंसिए कि तानाशाह का अहंकार हिल जाए. वहां पे तो आप काफी खुला कह रहे हैं कि मोदी तानाशाह है. मैं ये बोलने का एक तरीका है। अब ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा जो 70% तानाशाह की आवाज अहंकार टूट जाए, ये बोलने में कैसा लगेगा। मुझे ये बताइएगा, एट द मोमेंट और व्हेन यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि मैं ये बोले जा रहा हूँ मोदी तानाशाह है, इम्प्लाई किए जा रहा हूँ उसकी तरफ, इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है, लेकिन मेरी आवाज क्यों नहीं बंद हुई। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि कितने लोगों की आवाजें ऑलरेडी बंद करा चुके हैं, कितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो खुलकर बोल पा रहे हैं, कितने लोग हैं जो खुलकर प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं किसी चीज के बारे में, कितने यूट्यूब चैनल्स हैं। अब तो पिछले 3 दिन पहले की खबर है ये, यूट्यूब चैनल्स को भी ये ब्लॉक कराने लग चुके हैं। बोलता हिंदुस्तान एक चैनल था, उससे उसे ब्लॉक करा दिया गया है। आज ही की खबर है, आर्टिकल 19 और एक है क्या था, नेशनल दस्तक, इन दोनों को ऑर्डर दिए जा चुके हैं ब्लॉक कराने के। तो ज्यादा दूर नहीं है, मेरा चैनल भी ये ब्लॉक करा देंगे, मेरी आवाज भी बंद करा देंगे। तो मैं ऑलरेडी वार्निंग दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं लोगों को कि क्या हो रहा है देश में। उस दिन का इंतजार मत करो जिस दिन मेरा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उस दिन फिर कोई बोलने वाला बचेगा नहीं, और ये तब लेट हो जाएगा फिर। ये वार्निंग, ये चेतावनी आप जानबूझकर दे रहे हैं, आप डिलिबरेटली दे रहे हैं. यू आर ओपनिंग अप द आईज एंड ईयर्स ऑफ योर कंट्रीमैन. दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. एग्जैक्टली। If a German or a Frenchman or an Italian or a Brit were to say, Dhruv Rathi, what's your opinion of Narendra Modi? What would be your honest answer about the man? I would not tell them much. I would just tell them read your own newspapers from Singapore to Japan to USA to Germany. All the international media is not in the control of this government. So they are printing out what is happening. Just go and read the newspapers and make an opinion for yourself. But you're also saying that what is written about Modi in the New York Times, the London Times, the Guardian, what's said on BBC or CNN is correct. It's not misleading. It's all independent opinions. There is no correct. An opinion can't be correct or wrong. It's all opinions after all. And if there are some people are saying something, some are saying the other things, but at least in the international media, there is no pressure on them and they are able to speak freely. So just read a variety of opinions that are being published in the international media and make your opinion for yourself. The problem is, and you know this better than I do, that the impression and opinion of Modi that's conveyed in the international media is very different to what the country seems to think of him at home. The recent Pew survey suggests that over 75% of the Indian people admire him. More importantly, they like him. And yet, as you said, he's 70 to 80% a dictator. What does that tell us about the Indian people themselves? नहीं, That's ये जो सर्वेज हैं, पीयू सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि if you take them at the face value, they can be highly misleading, because the same survey suggests that I think Rahul Gandhi ko bhi 62 to 65% people admire in India. Same survey suggests that. And it all is a matter of perspective. आप ये सवाल कैसे करते हो लोगों से, और लोगों का असली ओपिनियन
क्या है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन वो निकल कर कैसे आता है. I'll do an example. Let's do an example. I'll do a small quiz with you. Do you like eating burgers, Karan? I love burgers. They're my favorite food. Okay, let's imagine an imaginary burger here. And I say that this burger is a very healthy burger. 75% of this burger is made of whole wheat grain and full of nutritious veggies. On a scale of 1 to 10, how healthy would you say is this burger? To begin with, I would refuse it. If the burger is veggies, I don't want it. I'll be honest with you, I prefer a good beef burger. Sure, but honest, I'm not asking you to rate it on a spectrum of how delicious this is. Just rate it on how healthy it is from a scale of 0 to 10. To me, the taste of the food is more important than the nutrition value. I care more about the food that I eat in terms of its taste. So if it's nutritious but tasteless, I would say I don't want it. Sure, but just give it a rating on health aspect. Oh, well, if you insist, I'll give it a rating. Very nutritious and inedible. 0 to 10. 0 to give me a number. 0 to 10. 10 is the healthiest, 0 is the unhealthiest. 5, because it's nutritious, but I don't want to eat it. No. Only give me a rating based on health. Okay, 8. 8. Okay, now let's imagine another burger here. Another imaginary burger. And this is full of unhealthy stuff. 25% of this burger is made of trans fats. And you know, trans fats are very bad for your health. They can cause cancer. On a spectrum of same 0 to 10, how healthy would you say this burger is? Oh, I would agree that it's probably at 2 or 3 and no higher, but it's probably Exactly. delicious and I'll still want to eat it. Now, the thing is, what if I tell you both these burgers are the same burger? It's just the way of asking the question that is different. Absolutely. 75% healthy burger or 25% unhealthy burger? In other words, the Pew surveys that suggest that the Indian people are enamored of, admire, and like Narendra Modi to the extent of 75% are misleading surveys. You're concluding, or they are concluding with whatever result they want to This is find. not a Don't misleading trust survey. them. Look, the rating you gave for the burger, it's not misleading. You gave your honest opinion, what you think. It's just that the way we answer something can be different based on how the question is framed. So So I don't what know how exactly the question was framed in But let's terms of. come back. Let's come back to my question rather than the survey. You're saying to me, don't rely upon the Pew surveys to suggest that 75% of the Indian people admire and love Modi. It all depends upon the way the question is asked, and it all Exactly. depends upon the way the answer is assessed. The two together can convey whatever impression the survey makers want to convey. एग्जैक्टली बिकॉज मैं अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में घूम रहा था. जितने लोगों से मिला सबने मुझे कहा कि आपका काम बहुत पसंद आता है, आप बहुत सही कर रहे हो. हमें सही में सरकार बहुत गलत कर रही है, लेकिन हम खुलकर बोल नहीं सकते. हम शांत हैं, लेकिन हम अपना जो जोर है वोटिंग के समय दिखाएंगे. Let me, on that, take up another question. In your videos, you are sharply critical of the way governors, the Election Commission, the Enforcement Directorate, the CBI are misused by the government in power today. But each of these institutions are manned by individuals who have the choice of standing up and refusing to do what they consider to be wrong, but they don't. Why do people, particularly people who are in power, give in to Modi rather than stand up for the right thing? See, the thing is, people in constitutional positions, it's a bit harder for them. It is क्यों way नौकरी harder for चले them to जाएगी? speak up. You're saying it's hard because नौकरी चले जाएगी? नौकरी चले जाएगी, फैमिली पर प्रेशर बनाया जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं. लेकिन एक आम जनता को ज्यादा कुछ नहीं करना. उन्हें ना अपनी जॉब की परवाह है, उन्हें बस अपना जो जोर दिखाना है वो वोटिंग करके दिखाना है. जब वो वोट करने जाएं, इस सरकार को निकाल कर फेंके ताकि देश को बचाया जा सके. ये मैसेज आपने, बल्कि जो आपने वीडियो बनाया था अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बारे, आपने यही मैसेज विद ग्रेट पैशन एंड विद ग्रेट इमोशन यू अपील टू द ऑडियंस that they should share the video, each of them with another 100 people, so that the entire country gets to hear the truth of the message that you were revealing in that video. How confident are you that your audience will actually do that? I checked the audience. It's nearly 25 million people this morning. That's huge. But how Exactly. confident are you that each of those 25 will share it with another 100, making it an astonishing 125 million and more, considerably more, 250, 2,500 million. How confident are you that will happen?
आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे अपनी ऑडियंस पे पूरा भरोसा है। मुझे अपने ऊपर, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। ऑलरेडी 2.5 करोड़ लोग उस वीडियो को देख चुके हैं यूट्यूब पर ही सिर्फ। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उसकी क्लिप्स शेयर की जा चुकी हैं आई थिंक, और व्हाट्सएप पर भी उसे फैलाया जा चुका है। आई एस्टिमेट दैट वन सिंगल वीडियो हैज बीन व्यूड बाय अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। But then, isn't there a contradiction or at least a sharp contrast between, on the one hand, people like governors, election commissioners, government servants, ED officials who buckle under the power of Modi, and on the other hand, the ordinary people who you're appealing to, you're telling them to wake up, you're telling them to vote against the government, you're telling them to free themselves. Isn't there a contrast and a contradiction between the two? देर इज ऑब्वियसली अ कॉन्ट्रडिक्शन, बट इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू। लोगों के ऊपर प्रेशर है, कोई अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। वैसे भी इकोनॉमिक हालत देश में इतनी खराब है, लोग अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस करें इस हद तक। इसलिए लोग चुपचाप रहते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे अपनी जॉब नहीं खोनी, लेकिन अंदर से मैं ये फील करता हूं। बहुत से लोग हैं ऐसे, और आज जितने भी पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया जा रहा है, उन्होंने भी यही चीज कई बार बताई है कि जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स उनको अरेस्ट करने आते हैं, ईडी के लोअर लेवल के ऑफिसर्स उन्हें अरेस्ट करने आते हैं, वो कहते हैं हम बस अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। जजेस के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो मुझे ये बताइएगा, मैं समझ सकता हूं कि आम आदमी पे प्रेशर है, आम आदमी को डर लगता है, वो नौकरी नहीं खोना चाहते, दे डोंट वांट देयर फैमिलीज टू सफर, बट when they go to vote they are alone in that booth. No one एग्जैक्टली। knows what they are doing. It's a completely secret vote. How confident are you that जब वो मौका आएगा, जब बिल्कुल अकेले उनको अपनी वोट पे बटन डालना पड़ेगा, that they will actually vote against this government, that they will remember what Dhruv Rathi has said, and Dhruv Rathi's message was कि जब वो मौका आएगा, make sure you vote against. How उन्हें confident बस ये चीज that याद will रखनी है happen? कि जब मैं वोट डालने जाऊं, अपने देश के लिए डालने जाऊं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के पर्यावरण को बचाने के लिए, और देश के फ्यूचर को बचाने के लिए। ये है आपका मैसेज उनको, वोट टू सेव योर कंट्री. एग्जैक्टली। And saving your country means getting rid of this government, doesn't it? फॉर नाउ यस। इन द फ्यूचर अगर कोई और गवर्नमेंट ऐसा करती है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, तो मैं खुलकर बोलूंगा उनके खिलाफ। Bilkul. Every time the government lets down the country, we must vote it out. But for या today, the government that is letting down the country is the Modi government. That is the government we must vote out. एग्जैक्टली। Then let me ask you, how do you view Arvind Kejriwal and Hemant Soren's arrest? How do you view the tax terrorism facing the Congress party? What does this tell us about the attitude of the Modi government to the opposition? Modi claims India is the mother of democracy. He probably sees himself as the creator of India's democracy. And yet, how do you view the way he treats chief ministers, the way he treats the Congress party? एट दिस पॉइंट मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। हर रोज एक नई इन्वेस्टिगेशन अखबार में छपती है। जैसे अभी इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन आई कि 25 ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस जो बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं, उनके ऊपर करप्शन के आरोप थे। बीजेपी में शिफ्ट होने के बाद उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसे रोक दिया गया। ये जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, इसके बारे में हर कोई बात किए जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो अरेस्ट हुई, कोई मनी ट्रेल नहीं निकला, लेकिन एक इलेक्टोरल बॉन्ड का कनेक्शन जरूर निकला। जिस बंदे ने उसको खिलाफ स्टेटमेंट दी, उसने 50 करोड़ चंदा बीजेपी को डोनेट किया। हेमंत सोरेन का केस देख लो क्या हुआ यहाँ पर। उन्हें अरेस्ट किया किस बेसिस पर, जिस भी बेसिस पर किया हो, जो मनी लॉन्ड्रिंग अलेजिड स्कैम उनके खिलाफ बोला जा रहा था। 2 दिन पहले ईडी की स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट दी उन्होंने कि इनके घर में स्मार्ट टीवी है, इनके घर में रेफ्रिजरेटर रखा है, और इससे साबित होता है कि इन्होंने करप्शन किया है। तो भाई कितने लोगों के घर में स्मार्ट टीवी और फ्रिज रखा है, क्या इससे साबित होगा उन सब ने करप्शन किया है? इनके पास प्रूफ ही नहीं है। ये सब अच्छा, ये तो एक चीज ऐसी है जो बीजेपी सपोर्टर्स भी मानने लग गए हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन का जो गेम चल रहा है, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको जो कहता हो कि ये चीज नहीं हो रही है आज देश में। So Modi's treatment of chief ministers, Modi's tax terrorism against Congress, does it in your eyes prove he's not a Democrat, that he's behaving dictatorially, he's behaving undemocratically? फॉर श्योर। और ये भी दिखता है कि इससे नरेंद्र मोदी कितना डरते हैं एक्चुअली में। इट रिफ्लेक्ट्स हिज इनसिक्योरिटी एंड कावर्डलीनेस। So this attitude of dictatorship is actually born out of insecurity, lack of confidence in himself. फॉर श्योर। मैं तो मानता हूं कि हर एक तानाशाह एक्चुअली में अंदर से डरपोक होता है।
अंदर से डरा हुआ होता है, उसे कॉन्स्टेंटली 2400 घंटे इस बात का डर रहता है कि अगर मैं जैसा बर्ताव मैं आज लोगों के साथ कर रहा हूं, अगर कल मेरे साथ वैसा बर्ताव किया गया तो मेरी क्या हालत होगी। तो 2400 घंटे वो इस डर में जीते हैं। क्योंकि आप वर्ल्ड वॉर 2 का देख लो क्या हुआ था। हिटलर ने जो ज्यूस के साथ किया, जो जैसा सलूक उसने किया लोगों के साथ, जब हारने लगा हिटलर तो उसने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। इतना डर था उसके अंदर कि पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या कर देंगे। मैंने ज्यूस को गैस चेम्बर्स में डाला, इतना टॉर्चर किया, अगर ये मुझे भी वैसे ट्रीट करने लग गए मैं तो सही नहीं पाऊंगा। खुद का भेजा उड़ा दिया उसने। तो आप ये कह रहे हैं कि 56 इंच की छाती वाले अंदर से डरपोक हैं? ऑफ कोर्स डरपोक हैं, तभी तो ये सब हो रहा है। इनफैक्ट आखिरी बार जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला आखिरी बार जब लास्ट अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया था, शायद आप ही के साथ था वो, उसके बाद से मुझे लगता है इतना डर लगा उन्हें इस बात का कि ऐसी बेइज्जती कभी नहीं होनी चाहिए मेरी दोबारा। ऐसी बेइज्जती हो गई तो पता नहीं क्या होगा। और उसी डर में आकर ये टोटल मीडिया कंट्रोल उन्होंने जमाया कि मैं ऐसी बेइज्जती नहीं सह सकता, मुझे सारे मीडिया पर कंट्रोल जमाने की जरूरत है, कोई मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता। और उसके बाद से एक अनस्क्रिप्टेड सवाल तक उन्होंने नहीं लिया किसी से। इन आज के दिन अगर देखना, अभी इलेक्शन टाइम आ रहा है, वो बहुत सारे इंटरव्यू करेंगे। एक चीज नोटिस करना कि किसी भी इंटरव्यू में उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यूअर सवाल करेगा, उनका जवाब आएगा, दूसरी तरफ से जीरो काउंटर क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि सब कुछ प्लान्ड होगा, सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से किया जाता है। उनमें हिम्मत ही नहीं है एक भी अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन लेने की। सो ये हमारे प्रधानमंत्री डरपोक हैं, बिना हिम्मत के हैं, बिना करेज और स्ट्रेंथ के हैं? ऑफ कोर्स है। उनकी वो जो ये कर रहे हैं उससे पता लग जाता है क्या हो रहा है। In your videos, Dhruvrati, you are also very critical of the mainstream media, both news channels and newspapers. And many people say instead of barking like guard dogs, they are silent like lapdogs. Do you believe that perhaps when the country needs the Indian media most, the Indian media is letting down the country? इसमें तो 1% भी कोई डाउट नहीं है। इस बात को तो हर कोई एक्नॉलेज करता है कि मीडिया बिक चुका है। और एक बार फिर से सारे बीजेपी वोटर्स भी इस बात को मानते हैं कि मीडिया बिक चुका है। So when the term Godi media is used, it's actually a polite term. This is a sold media, बिक चुका है. आई मीन गोदी मीडिया इज अ वे टू से दैट, राइट? Politely. पोलाइटली। What response have you got from the government, particularly for the last two videos that you've made, where you asked whether India is becoming a dictatorship and whether the dictator dara hua hai? I know that the government won't like them, but have they ever tried to reach out to you? Have they ever tried to speak to you to win you over and convince you? नो, they've never really tried to reach out to me officially. बट एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, अनऑफिशियली कुछ महीने पहले उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश करी थी। एक्चुअली सरकार ने नहीं, एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक गोदी सेठ ने रीच आउट करने की कोशिश करी थी। और मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वो एजेंसीज के थ्रू आते हैं हमेशा। तो मैं कोई ये नहीं कह सकता कि देखो इस एविडेंस दिखा के ये आया था सही में। लेकिन उसने मुझे कहा था, उस वक्त कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी कि कोई रिपोर्ट निकली थी इस गोदी सेठ के खिलाफ। और मुझे एजेंसी ने रीच आउट किया कि ये आपको इतने पैसे देंगे, आप वीडियो बनाओ कि ये रिपोर्ट झूठी है और ये गोदी सेठ हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए बात करता है, नेशन के लिए बात करता है। ऑब्वियसली मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया। लेकिन बाद में मैंने अपने 2-3 यूट्यूबर दोस्तों से पूछा, उन्हें भी वही सेम रिक्वेस्ट आई हुई थी कि वीडियो बनाओ और गोदी सेठ की तारीफ करो। फिर मैंने एक गोदी यूट्यूबर को बाद में देखा, उसने सेम वीडियो बना रखा था वही पॉइंट्स यूज करके जो मुझे बोलने को कहे गए थे। अब ये नहीं पता कि मुझे उन्होंने पैसे लिए थे या नहीं, या वो फ्री में काम कर रहे थे। लेकिन ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। और एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है, अभी मेरे एक और यूट्यूबर दोस्त को एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर का ऑफर आया था कि इंटरव्यू कर ले वो उन्हें। तो पैसे देकर ऑब्वियसली। लेकिन कंडीशंस थी उसमें, दो बहुत बड़ी कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप क्वेश्चंस की लिस्ट पहले दोगे कि क्या क्या पूछा जाएगा। और दूसरी कंडीशन थी कि वीडियो तैयार होने के बाद आप हमें वीडियो दोगे, हम उसमें जैसे चीजें चाहें काटेंगे और फिर आप अपने चैनल पे अपलोड करोगे। ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट भी उसने मना कर दी। लेकिन आप देख सकते हो कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। और इसका मतलब है कि उन इंटरव्यू में एडिटिंग हो रही है।
बिल्कुल एडिटिंग हो रही है, सभी कुछ जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसा ही। वो इंटरव्यू तो है ही नहीं, वो एक पीआर प्लेटफॉर्म है। They say, Dhruvrati, that this is a very vengeful and nasty government. Are you worried about what the government might do to you, either by revenge or retribution? देखो, मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा बहुत होता है कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इसके बारे में सोचने का। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, और मैंने सोचा कि अगर हर कोई इसी डर में रहकर अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर देश का कुछ नहीं हो पाएगा। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी इसलिए। मुझे ये बताइएगा, while you're out of the country, you're safe, but are you ever worried when you're back in India that you could be targeted? Are you worried about your family that lives in India that they could be targeted? थोड़ा सा तो रहता ही है कि ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे ही। तो ऑफ कोर्स रहता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैंने अब ये पाथ ले लिया है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं आप। नहीं, अब या तो देख लेना क्या होगा आगे। अभी तो मैं फ्यूचर की इतनी सोचता नहीं हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं वो कर रहा हूँ यहाँ पे। If Modi wins a third term, and perhaps with the sweeping majority, as many in India think is likely to happen, how do you see the next 5 years for India? अब देखो, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं कि मैं बताऊं कि प्रिडिक्ट कर सकूं कि अगले 5 साल में क्या होगा। बट आई कैन से कि अभी जो हो रहा है उसे देखकर आगे क्या होगा, आई कैन मेक एन ओपिनियन। माय ओपिनियन इज दैट कि आज देख लो मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर को पूरा खत्म कर दिया इन लोगों ने। लद्दाख किस खतरे में है। अगर ये तीसरी टर्म जीतते हैं तो लद्दाख को भी तबाह कर देंगे। लद्दाख की इकोलॉजी, लद्दाख का जो अपना कल्चर होता है वो तबाह कर दिया जाएगा। लक्षद्वीप के साथ यही हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हसदेव के साथ क्या हो रहा है। जो भी देश का कल्चरल हेरिटेज है, हमारे देश का जो पर्यावरण है, देश की बायोडायवर्सिटी है, लोकतंत्र तो है ही, उसकी बात मैं आगे करता हूं, लेकिन देश का जो कल्चरल हेरिटेज और बायोडायवर्सिटी है, ये लोग उसको भी तबाह कर देंगे अपने पैसे के लालच में आकर। देश को टुकड़ों टुकड़ों में करके बेचा जाएगा इन गोदी सेठों के हाथ। और जनता की हालत ठीक नहीं होगी। और लोकतंत्र की जहां तक बात करी जाए, ये वन नेशन वन इलेक्शन लाने का प्लान कर रहे हैं। वो एक और बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, जिसके पीछे इकलौता पर्पस ये है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी कम कर सके। अभी क्या होता है, जैसी इलेक्शन आती है ये पेट्रोल प्राइसेस नीचे कर देते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए। अगर 5 सालों में सिर्फ एक ही इलेक्शन होगी तो वो भी नहीं इन्हें करना पड़ेगा। पेट्रोल प्राइस फिर 200 क्रॉस कर जाएगा। जो आपके बच्चों को एजुकेशन मिलती है सरकारी स्कूलों में, उनकी हालत बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। आपको जबरदस्ती फोर्स किया जाएगा प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओ। वहां पे फीस बढ़ाई जाएगी क्योंकि ये उन कंपनी से चंदा लेकर अपना धंधा चलाएंगे। और हर छोटी से छोटी चीज में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। महंगाई बढ़ जाएगी हर चीज में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी। और अगर आप आवाज उठाने की कोशिश करोगे तो आपकी आवाज दबा दी जाएगी। कोई जरिया नहीं बचेगा प्रोटेस्ट करने का सरकार के हाथों। क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स, हमारी भी आवाज खत्म कर दी जाएगी। और अगर कोई प्रोटेस्ट करने की सोचे तो वही टीयर गैस आ गई, कभी सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया तो कभी इंटरनेट शट डाउन कर दिया। बेसिकली लोगों के हर एस्पेक्ट में लोगों का फ्रीडम खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और जो देश है, देश को तो टुकड़ों टुकड़ों में बेचने की कोशिश करी जाएगी। Let me ask you one specific question. 14.3% of our population are Muslims. They are our brothers and sisters, they are fellow citizens. They amount to perhaps 200 million people. Yet this government publicly calls them Babar ki aulad. The chief minister of Uttar Pradesh taunts them by calling them Abba Jan. Ministers or MPs or MLAs from the BJP frequently tell them, go to Pakistan, forgetting that this is their home just as much as it is your home or mine. Even Dharma Sansads have been held in 2022 in Haridwar, where they were planning and talking publicly about a genocide and ethnic cleansing of Muslims, and the government had nothing to say. The Prime Minister was completely silent. We ये accuse them कम्युनल of पोलर love jihad. Does that upset you? Does that hurt you when you look back on the country you grew up in? When you look back on the country you love, what do you feel about the way we treat Muslims? ऑफ कोर्स, ये जो कम्युनल पोलराइजेशन है ये एक तरीका है उनका लोगों को एनरेज करने का और वोट मांगने का, अपनी पावर और पैसे को कंसोलिडेट करने का। ये और कुछ नहीं है एक्चुअली में।
अगर जो हिंदू लोग हैं वो भी पीछे देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, उन्हें भी दिखेगा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। ये सारा जो खेल खेला जा रहा है, देश को बेचने का खेल खेला जा रहा है, पूरी पावर कंसोलिडेट करने का, देश को डिक्टेटरशिप बनाने का खेल खेला जा रहा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें क्या पता चला, जो देश की टॉप बीफ कंपनी है उसने भी करोड़ों रुपए डोनेट किए बीजेपी को। बीफ कंपनीज बीजेपी को डोनेट कर रही हैं और ये फिर हिंदू बनने का नाटक करते हैं। ये सारा जो खेल है पीछे, ये सिर्फ पैसे का है और पावर का है। इसका किसी रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं। और जो लोग सोचते हैं, जो हिंदू सोचते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ये हो रहा है या मुस्लिम को ये सरकार दबा कर रख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये सरकार सिर्फ अपने पैसे और अपने पावर की चिंता करती है। Before I end, I want to return once again to a couple of questions about you personally. The world knows you through your powerful work on YouTube. Do you believe social media today is a powerful force for shaping public opinion and for driving social change? जो माइक जिस माइक के जरिए ये मीटिंग हो रही है या ये वीडियो कॉल हो रही है, जो कंप्यूटर में माइक लगा है, अब ये माइक क्या है? क्या ये माइक एक फोर्स है सोशल चेंज लाने के लिए? नहीं, ये सिर्फ एक टूल है। ये एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जिसके अपना कोई खुद का दिमाग नहीं है इसमें। ये बस एक टूल है जिसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हिटलर इस माइक के जरिए बोले तो उससे डिस्ट्रक्शन दुनिया भर में फैलाई जा सकती है। अगर गांधी जी इस माइक के जरिए बोले, उससे कंस्ट्रक्टिव थॉट्स फैलाए जा सकते हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया भी एक टूल है। उसे जिस तरीके से यूज किया जाए उस पर डिपेंड करता है कि इसका क्या, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के दिन आप देख रहे हो कि जो लास्ट वॉइस निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया से निकल कर आ रही है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि फेसबुक पेपर्स लीक होते हैं और दिखता है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज किस तरीके से लोगों की आवाज दबा रही हैं या सरकारों के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ टूल एट द एंड ऑफ द डे। So, in other words, it's not the medium that matters, it's the person using the medium and what they're using it for, what their intention and purpose is. That's what. एग्जैक्टली। As a result of the way you use the medium, as a result of the way you express yourself, you have a fan following that stretches into crores. Is it difficult to handle your celebrity status? Is it difficult to handle your fan following? No, nothing is such. But हम is it becoming a thankfully, moral responsibility? Do you say to yourself, hang on, I need to be careful. There are crores watching and listening. I can't just be frivolous. that for sure, everything I say must be carefully thought of because there are crores of people listening, and nothing must be taken out of context, and nothing, everything I want to communicate must be communicated in the most simplest way possible and the most direct way possible. Of course, I have to be very, very conscious about this fact. You're still a young man. How do you see your future? What are your plans over the next 10, 15 years? कल कल मेरा YouTube चैनल बैन हो सकता है। मुझे कल का भी नहीं पता। तो 10 to 15 years का मैं क्या बताऊंगा? So you're really saying you live day by day. I live day by day. Exactly. And the reason you live day by day is because you don't know what the authorities will do to your channel. It's Mr. Modi and the threat that he holds out potential that keeps you uncertain and unsure. Yes, but at the same time, I don't live in fear. I live a very happy, I smile, a very happy life. I smile and laugh, and I'm ready to take on any challenge that comes. I'm Would ready you to ever face the next big adventure. would you ever consider joining politics? ये एक ऐसा सवाल है जिसका मैं यूजुअली नो में जवाब दूंगा, लेकिन आई डोंट नो हाउ थिंग्स चेंज वेरी क्विकली। कल 30 साल बाद पता नहीं मेरे क्या ओपिनियंस हो। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं 30 साल बाद ऐसा कुछ करूं फिर इस इंटरव्यू को लाकर दिखाया जाए कि देखो इसने तो पहले ना कहा था कि ये कभी पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेगा। तो आई लेट इट बी। Finally, हाँ। would a career in the films ever interest you? You clearly have the looks and the talent, but would this attract you? I'm very honored that you think that, but I feel that I'm not that good of an actor. I have received some offers,
in some someone wanted to film some music video or something. Firstly, I believe I'm not that good of an actor, and secondly, I'm not that fond of the way, most of the film industries ki ये लड़कियों के साथ नाचना बिकिनी में और लग्जरी कार्स का शो ऑफ करना, जो आज के दिन गाने हैं जो फिल्में दिखाई जाती हैं, आई फील वेरी क्रिंज्ड सीइंग दैट. तो फॉर श्योर नॉट दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, but if there are some education films I can contribute towards in the future, I'd be open to that. Or maybe an art film. To Or sort maybe of. an art film, yeah. Okay. Dhruvrati, thank you very much for making time for me. Thank you very much for sharing with the audience the sort of person you are. And more importantly, thank you for being honest and upfront with your views of Narendra Modi. I can Thank bet you. he won't like them, but I can also bet he'll find out about everything that you said. Take care. Stay safe. Thank you.